ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੀਨਾ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਸ਼ੇਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਏ ਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੋ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੋਏ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਉਗੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਓ, ਤੈਂ ਨਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਉਗੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਹੀ ਬਸਾਰੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੁਰ ਜੈਸਾ
सतगुर मेरा पुरख विधाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता, पुरख विधाता। गुर जैसा नहीं कोई, गुर जैसा नहीं कोई, जिस मस्तक पार सुलागा से, जिस मस्तक पार सुलागा से, गुर जैसा सतगुर मेरा सर्वविद पाले, सतगुर मेरा सर्वविद पाले, सतगुर मेरा मार्ग वाले, सतगुर मेरा मार्ग वाले, सतगुर मेरे की बड़ाई, सतगुर मेरे की बड़ाई, प्रगट भी है सबनी ताई, प्रगट भी है सबनी ताई, सबनी ताई। गुर जैसा नहीं कोई, गुर जैसा नहीं कोई, जिस मस्तक पार सुलागा से, जिस मस्तक पार सुलागा से, गुर जैसा सतगुर मेरा तारन तार, सतगुर मेरा तारन तार, सतगुर मेरा कार दीवान, सतगुर मेरा कार दीवान, सतगुर के
दिखलाया, पर दिखलाया गुर जैसा नाहीं कोई, गुर जैसा नाहीं कोई। जिस मस्तक पार सुलागा सेव, जिस मस्तक पार सुलागा सेव गुर जैसा। जिन गुर सेविया तिस पावन व्यापै, जिन गुर सेविया तिस पावन व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै, जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै। नानक सुनावै सिमरत वेद, नानक सुनावै सिमरत वेद, पार परम गुर नाहीं भेद, पार परम गुर नाहीं भेद, गुर नाहीं भेद, गुर जैसा नाहीं कोई, गुर जैसा नाहीं कोई। जिस मस्तक पार सुलागा सेव, जिस मस्तक पार सुलागा सेव, जिस मस्तक पार सुलागा सेव गुर जैसा नाहीं कोई, गुर जैसा नाहीं कोई। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ
दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। आड़ी पक्का तीसो संत आगे, आड़ी पक्का तीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे, सास सास मन नाम समारे, एह विश्राम नित पाई, एह विश्राम नित पाई, एह विश्राम नित पाई, एह विश्राम नित पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूट, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई, बिन सुजाए परमाई। आनंद रूप रवयो सब मथे, आनंद रूप रवयो सब मथे, जद कत पे को जाई, जद कत पे को जाई, जद कत पे को जाई, जद कत पे को जाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं,
तक जाए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तक जाए। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम दयाल कृपाल कृपानिध, तुम दयाल कृपाल कृपानिध, तुम दयाल, तुम दयाल, तुम दयाल कृपाल कृपानिध, तुम दयाल कृपाल कृपानिध, पतित पावन गोसाई, पतित पावन गोसाई, पतित पावन गोसाई, पतित पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाए, कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमक बुलाई, मुख ते निमक बुलाई, मुख ते निमक बुलाई, मुख ते निमक बुलाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं।
नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याए। तुम करो दया मेरे साईं, 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 तुम करो दया मेरे साईं। तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। चरण कमल का आसरा, प्रभु पुरख गुणदास। चरण कमल का आसरा, प्रभु पुरख गुणदास। कीर्तन नाम सिमरत रहो, जब लग कट सास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। मात पिता बंधप तू है, मात पिता
तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुम्हारी कृपा ते पार ब्रह्म, तुम्हारी कृपा ते पार ब्रह्म तो कर को नास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। मात पिता बंधप तू है, तू सर्व निवास, मात पिता बंधप तू है, तू सर्व निवास। नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुम्हारी कृपा ते पार ब्रह्म, तुम्हारी कृपा ते पार ब्रह्म दो घर को नास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, 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 दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। निज कर दे कर सब बैरन को आज संघर, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहूं सो तुम दे पाओ। सेवक सिख हमारे तरिए, चुन चुन सत्र हमारे मरिए। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। हूँ जो सदा हमारे बच्चा, श्रेयस तुझ जो करे रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब सत्य सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।
जगत बनायो देह दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव गण को शिव गुण सुख दियो सतरंग को पलमों बध कियो खट खट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह पारा जब आकरख करत हो कबू तुम मिलत देह तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निराला जानत वेद भेद अरयाला निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनील अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीवत नह पे आप अपनी बुध है जेती नरनत पिन्न पिन्न तुह केती तुमरा लखा न जाए पसारा हे विध सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सारूपा रंग भयो राव कही रूपा अंडज जे रच से तज कीनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पिरोसन कर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपा आद चुगाद स्वरूप स्वयं था अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिते वत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे रस तुझ तब सरनी परे जिनके दुष्ट दुखित हर मरे पूरक जब पग परे तिहाई
जगमाता ग्रंथ करा पूरन सुभराता खिल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को जय करता श्री अस्तुज जग परे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गूंग जो याहि सुरस न पावै सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे हो जो या कि एक बार चौपई को कहे चौपई संबत 17 सहस परिचय अर्थ सहस पुन 3 कहिचय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सया पाए बहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सुमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरे कर मैं न करूँ सब तोरे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहार द्वार बाहे गहे की राजस गोविंद दास तुहार बाहे गहे की राजस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुरु प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाया राग रतन परिवार परियां शब्द गावनिया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल
हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
Jai Guruji Sangat ji. So today we have a special meditation session by Nitin Uncle. He has come all the way from California, and the theme would be spine, surrender, and stillness. So it's going to be a 30-minute session. So if in case anyone wants to leave, if you are not able to attend, you have some urgent work to go to. So please feel free to leave now. But once the session starts, would request all of you to please be seated and make the maximum possible use of it. संगत जी अभी एक मेडिटेशन सेशन शुरू होने वाला है. नितिन अंकल आए हैं. ही वुड बी फोकसिंग ऑन स्टिलनेस, स्पाइन एंड सरेंडर. तो अगर आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं तो प्लीज बैठे रहिए एंड इट विल गो अप टिल 6:30. इन द मीनवाइल अगर आप बीच में उठ के ना जाएं, इट वुड बी रियली नाइस एंड इट वुड बी डिस्ट्रैक्शन फॉर अदर पीपल हु आर डूइंग दिस सेशन. Thank you. We will wait for a couple of more minutes in case someone wants to leave. In the meanwhile, may I request Nitin Uncle to please come forward? And Sangat ji, there is space in the front here. It is often said if you are grounded, you are sitting down, then these things are most effective. In case you want to get up and come forward and sit down, please feel free to do that. संगत जी, अगर आप आगे आकर नीचे बैठना चाहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन इज बेस्ट अगर आप नीचे बैठकर करें, तो प्लीज फील फ्री, आप आगे आकर बैठ जाएं और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें अपने साथ जो भी बैठा है उनके. जिनको चेयर चाहिए वो भी अगर पीछे से आगे आ जाएं, इट वुड बी नाइस सो दैट यू हैव ए क्लियर विजिबिलिटी बिकॉज नितिन अंकल इज सिटिंग डाउन. Raghav uncle, if you could increase volume of the mic a bit, please. Okay, we have a lost mobile.
Jai Guruji. So can we start by giving Nitin Uncle a big round of applause, please? We can do better, bit louder. So all of us are awake. Thank you so much. Jai Guruji. Over to you, Nitin Uncle. I hope session के बाद ये ऐसे applause करें. Jai Guruji, Sangat ji. Today I sit here in front of you with two emotions, two essences. Number one is gratitude, and that gratitude is for Guruji Maharaj. If you'd asked me 3 weeks ago या 4 हफ्ते पहले कि मैं ऐसा कोई session कभी करूँगा गुरुजी के सामने, I would not have imagined. So of course, first of all, the thank you goes to Guruji, and also thank you goes to the entire Sangat for giving me the opportunity and for just listening to me. Number two is humility. I know nothing. I'll never know anything. I'm just a medium, एक ज़रिया. Ultimately, आज का session, which will last for roughly about 30-35 minutes, what this does to you is totally up to you. I pretty carefully chose the theme of the session, stillness, spinal, and surrender, because I firmly believe that when you are still, you have the utmost opportunity to be aware. और अवेयरनेस के लिए हमारी बॉडी में एक जो हमारी बॉडी का सुपर हाईवे है, which is the spine. According to me, that's the utmost thing that you can be aware of. And when you're still, when you're aware, आप उस state में ऐसे action आप ले सकते हो that allows you to do anything with ultimate surrender. So that's why I chose this theme for today. So with that said, if everybody is ready, I would welcome you to close your eyes. And just be with yourself. You're in a safe space here. It's always a safe space here with Guruji. Just be with yourself. Breathe. Sit comfortably any which way you like. If you need to adjust your position, feel free to do so. Just be with your thoughts, your emotions, howsoever you're feeling. Pass no judgment. Put no pressure on yourself.
don't feel the need at all to change anything. Just check in. Take a snapshot, a mental snapshot of how you're feeling right now. What is your mental state? Your emotional state? Your physical state, and just let things be. We will do a little bit of grounding breathing. That goes 4 seconds in. I will give you the count. 4 seconds hold. 4 seconds exhale. 4 seconds suspend and repeat. So if you're ready, let's breathe in. 1, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, suspend, 2, 3, 4, in, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, suspend, 2, 3, 4, inhale, 2, 3, 4, hold, 2, 3, 4, exhale, 2, 3, 4, suspend, 2, 3, 4. Come back to normal breathing. Slowly and gently, when you're ready, please open your eyes. So when you were breathing in the initial part, were you breathing, or was the breathing happening on its own? On its own, right? Yeah. We can control, but we can only control for a few minutes, and after that breathing happens on its own. Whether we are sleeping, lying down, eating, or whatever, breathing happens on its own. This is controlled by a part of the nervous system which is called as the autonomous nervous system. And it's a good thing कि वो है, क्योंकि अगर हम खुद से breathing करते या heart beat को control करते तो हम शायद नहीं कर पाते. So that's why this happens on its own. How many of you think the breathing was happening on its own? Raise your hands. So when you just raised your hands, you actually activated a part of the nervous system called as the somatic nervous system. Autonomous happens on its own. Somatic, where you control the movement. The reason I'm talking about this is, in the autonomous nervous system, जो भी आपके nerves हैं, आप उसको इस तरह से stimulate कर सकते हैं that you feel a heightened awareness of your rest system, your digest system, and you can put yourself in any mental state that you want to. हमारे जो autonomous nervous system है, उसमें 12 nerves होती हैं. उसमें one of the main nerves is called the vagus nerve, not Las Vegas. VAGUS. It originates at the back of your skull, and this is the only autonomous nerve which travels from the brain, goes through your throat cavity, comes inside the front of your body, and then branches off into your heart, your kidney, your liver. So this controls a lot. So whatever happens in Vegas doesn't stay in Vegas as far as this nerve is concerned. So we'll just do a little bit of a breathing technique that activates your vagus nerve. I will cue the counts. The breathing will go as 4-second inhale, just like we were doing, and then we will do a longer exhale. So anytime you do a longer exhale, especially with the sound, that helps you activate, stimulate. It's always active.
stimulate your vagus nerve. और हम जब exhale करेंगे, we'll do it with a humming sound. So out of the nose, humming sound like a bee. It's called a bee breath. So like, that's how we will exhale. When you're doing the 4-second inhale, this time, just see if you can do like a 3D breath. Generally, ऊपर नीचे जाती है. See if you can send it to your rib cage as well. So try to do a complete breathing. If you cannot do 4 seconds in, 7 seconds out, then do the best that you can and join in again. So when you're ready, I'll once again welcome you to close your eyes. Some normal breaths. Let's start with the 4-second inhale. In, 2, 3, 4. Long exhale. Humming. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In. 2, 3, 4. Hum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In. 2, 3, 4. Hum. 2, 3, 4, 6, 7. In. 2, 3, 4. Hum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. In. 2, 3, 4. Hum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more time. In. 2, 3, 4. Hum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And relax. Keep your eyes closed if you're comfortable and breathe normally. And check in with yourself one more time. Take a snapshot of how you're feeling now. Do you feel the same? Do you feel different? Everything is okay. But take a snapshot. What's your state now, mentally, emotionally, physically, spiritually? And just be. When you're ready, open your eyes, please. So we just spoke about the nervous system. All the activity happens at the top. A superhighway of the body, which is our spinal cord or our spinal system, basically. Did you guys know that human being is the only species with a straight, erect spine? Somebody's thinking, what about the lion? Okay, yeah, he's right. The lion is bent over. Is somebody thinking like a chimpanzee or a monkey? They can walk straight, but they do need to bend down ultimately. Did somebody think about the penguin? Well, is he proving himself wrong? Because penguin does have an erect spine. Not necessarily. Penguin has a spinal bone, but the spine doesn't work like the human species spine does, where it acts like a superhighway for the entire body. So there is some thought in yoga that possibly when our spine straightened is when our cerebral cortex blossomed into a flower. We don't know whether that's right or wrong, but it's possible because we do have the most advanced thinking, I think, of all the species on the planet. And we're also the only species with an erect spine, so maybe there is some correlation. But we probably don't pay enough attention to the spine.
How many spines do we have? One, right? Well, that is both right and wrong, right? So there are 5 sections to the spine: the cervical spine, the thoracic spine, the lumbar spine, then you have the sacrum, and then you have the coccyx, which is also known as the tailbone. So not only do we have the 5 sections of the spine, in each one of the sections we have multiple vertebrae, right? In the cervical spine we have 7. Somebody said 7 with me. In the thoracic spine we have 12. In the lumbar 5. Yeah, maybe there's more people that need to come here and sit with me and do this. In the sacrum, how many do we have? Again 5 joined together. 5 joined together. Well done. Yes. So after a certain age, our sacrum, the 5 vertebrae of the sacrum, they kind of fuse together. So we kind of tend to lose a little bit of flexibility as we age, but that gets replaced with wisdom. So don't feel too bad. And then, how many do we have in the coccyx? How many vertebrae? It's difficult to define. Look, Stopped you. 5 vertebrae, and they also get fused towards the end of the teenage. Everybody nod yes. We don't have to nod yes. Nod yes? It's fine. Don't worry, there is no voodoo stuff going on here. Nod yes? Yeah. You just used your C1. Congratulations. Say no. C2. Do you know the Indian head shake? That's C3 to C7. So you just used all of your C, the cervical spine muscle. See who just entered the room. Take a look. That's the thoracic spine. Nobody came. When we pick something off the floor, it's the lumbar spine. Our sacrum is responsible for moving our hips backwards and forwards. And our tailbone, also known as the coccyx, doesn't really have a lot of function to play. I mean, that's the piece that used to hold our tail at one point. But yeah, if you're getting uncomfortable while sitting for a long time, generally it's your tailbone telling you, I want to get up, I want to back. it's the vestige of the tail. Huh? It's the vestige of the tail. It's the prestige of the tail, yes. So we will do a little bit of spinal activation as well, or let's call it the spinal articulation. So you can, in yoga there is a saying that you're only as young as your spine is flexible. So what that basically means is the more flexible your spine is, the younger that you are. So we'll do a little bit of spinal articulation. So we bring a little bit more awareness to the different components of the spine. So for those that want, I will welcome you to close your eyes, or you can also leave your eyes open, whichever way you're comfortable. And by the way, if anybody is getting uncomfortable sitting in a particular position, feel free to adjust, as this needs to be your session. Okay, so we will start with sending our left ear to our left shoulder. Do not shrug your shoulders. Send your left ear to your left shoulder. Now send your head back and look up. So chin all the way up. Your right ear to your right shoulder. And your chin down in front. And back to left ear to left shoulder. So you just complete the rotation. So we'll complete these rotations. We'll do it 5 times on each side. This is pretty much entirely using your cervical spine and pretty much no other section of your spine. So let's start. Left ear to left shoulder. As you breathe in, go backwards. Right ear to right shoulder. Breathe out. Forwards. Back to the start. Round 2. Down. Round 3. Down. 4. And last. Let's reverse the motion. Start with the right ear to the right shoulder. Round 1 on the right side. And 2. 3. 4.
we will do a seated cat-cow. So generally this is done, as most of you would know, on your knees and your hands. But given the space constraint, we'll do it sitting. But I really want you to connect with your spine. See if you can try to connect with each one of the vertebrae, or at least even if not the vertebrae, each one of the sections of the spine. We'll go one section at a time. So when we go into a cow pose, try to originate that movement from your tailbone, going up to your sacrum, going up to your lumbar, your thoracic, and ultimately comes to the cervical spine, which is what turns your head upwards. So we're going to do this as we breathe in, and then we're going to breathe out. Reverse the motion from the cervical spine all the way down to rounding our back, down to the tailbone. And then once again, I will cue it. Let's start. So breathe in, we're going up. Breathe out, we're coming down, and we're trying to feel as many sections of our spine as we can. Okay? All right, let's go. Let's start. Up. Breathe out and down. In and up. Out and down. Continue. In and up. Slowly. Be very deliberate about this. Breathe out and down. In and up. Out and down. Once again, in and up. Out and down. One more time. Out and down. And last time, at your own speed, as slow as you possibly can. And when you're done, if you had your eyes closed, please open your eyes. And breathe normally. Just check in with yourself and see how you feel now compared to how you felt 5 minutes ago, 10 minutes ago, at the beginning when you came here. Relax. Let's talk a little bit about surrender. I'll be honest, I don't know anything about surrender. I do what I think is surrender, and I'll just share with you how I look at it. एक स्टोरी सुना। एक गांव में 4 दोस्त होते हैं. They grew up together, small village, and they get along with each other very well. Playing with each other, spending a lot of time, eating with each other together, going to school, or howsoever things used to be back in the day. एक का नाम होता है नाना, एक का नाम होता है भक्ति, एक का नाम होता है क्रिया, एक का नाम होता है कर्म. जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने अपने डिसिप्लिन चूज कर लेते हैं कि मेरे को किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है. नाना नाना, क्रिया क्रिया, कर्म कर्म, एंड भक्ति bhakti. What is Nana? Nana is somebody who is seeking the truth, always, intelligence. Bhakti, devotion and emotion. Karma, the act of taking action. And Kriya, aligning your inner energies. तो काफ़ी वो practices करते हैं अपनी. And as they grow up, as they're specializing in their practices, वो एक दूसरे के लिए एक jealousy और hatred आ जाती है. जो नाना practice करता होता है वो ये सोचता है कि यार intelligence के आगे तो कुछ भी नहीं है.
जो भक्ति प्रैक्टिस करता है वो सोचता है कि जिसने भक्ति नहीं चखी उसने क्या चखा. He feels pity for everybody. जो कर्म योगी होता है वो सोचता है कि ये सब लेजी हैं, सब चीज़ तो एक एक्शन में ही है. और जो क्रिया योगी होता है वो ये सोचता है कि the world is energy and I'm practicing inner energy. So जिसने एनर्जी की प्रैक्टिस करी उसने क्या किया? So they have an absolute disdain for each other. They don't get along anymore. एक important decision point आता है विलेज के पास. उनको अपने विलेज से एक दूसरे विलेज में एक किसी को भेजना होता है for an important decision. And they're looking for somebody who is very proficient in multiple aspects. अब वो ढूंढते हैं सारे विलेज में, उन्हें कोई नहीं मिलता. फिर वो इन चारों दोस्तों को, जो पहले दोस्त थे, इनको देखते हैं. एक है इंटेलिजेंट, एक बिलीव्स इन एक्शन, एक की इनर एनर्जी इज अलाइंड है और एक इमोशन एंड डिवोशन प्रैक्टिस करता है. पर हमें तो चारों ही चीजें चाहिए. तो वो डिसाइड करते हैं, वो चारों को भेज देते हैं. सो अपने विलेज से निकलते हैं चारों. एक फॉरेस्ट के थ्रू इनकी जर्नी होती है टू अनदर विलेज. एज दे आर वॉकिंग एकदम से बहुत ज्यादा स्टॉर्म आने लग जाता है, एकदम मूसलाधार बारिश. And the storm is so bad, and they're not getting it. They're not talking to each other. They're just walking in the same direction together. तो इतना ज़्यादा storm आ जाता है that their life is now in danger. तो जो भक्ति योगी होता है वो बोलता है कि जहाँ पे हम हैं इसके पास में एक पहले मंदिर हुआ करता था. So maybe we can go to the मंदिर and take a shelter there. तो चलते चलते हैं वहाँ पे मंदिर मिल जाता है. अब मंदिर वो देखते हैं तो मंदिर में खाली एक डेटी का बीच में आइडल होता है, एक छोटी सी रूफ होती है, देयर आर नो वॉल्स. तो अब भक्ति बोलता है मैंने देखा इसको, तो मैं जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा. वो अंदर जाता है डेटी के पास, तो वो तो प्रोटेक्ट होता है, बाकी तीन बोलते हैं कि हमारा क्या. फिर भक्ति को हटा के कर्म योगी लग जाता है, कर्म योगी को हटा के क्रिया योगी लग जाता है, क्रिया योगी को हटा के भक्त वो the last one लग जाता है. तो ऐसी कर करके टर्न्स लेते हैं, but they're still suffering because the storm is very bad. And सारी लाइफ ये जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं ये रियलाइज करते हैं कि हम कितना भी योगा कर रहे हैं, चाहे हम कर्म योगा करें, क्रिया योगी करें, भक्ति योगी करें, या कुछ भी करें, हमें भगवान क्यों नहीं मिलते हैं. तो anyway ये स्टॉर्म होता है और ये चारों के चारों finally they come together and they're like, how about we all come together and hug the deity. स्टॉर्म ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, हम डेटी को हग करते हैं एंड वी कैन ऑल बी प्रोटेक्टेड. चारों को चारे जाते हैं, डेटी को हग करते हैं, सामने भगवान आ जाते हैं. तो वो सब पूछते हैं भगवान इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कर्म योगी, मैं क्रिया योगी, मैं भक्ति योगी, आप अभी तक तो नहीं आए, आज क्यों आ गए. तो बोलते हैं क्योंकि चारों ही होने चाहिए. जहाँ चार हैं वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ सरेंडर के साथ मैं आपके साथ ही रहूँगा. We will do a meditation now. It's called the 61-point meditation. It goes by many different names. You can look it up online as well. और इस meditation से मेरा जो experience होता है वो I feel very focused and I feel very relaxed. I feel very intense, not tense, intense, and I feel very relaxed. So we'll do the meditation. And then a little bit more, and then we're done. So when you're ready, I welcome you to close your eyes. Imagine there is a point of light right between your eyebrows, in the middle of your forehead. A point of light. Now the light travels to the pit of your throat. Now the light travels to your right shoulder, to your right elbow, to your right wrist, the thumb of your right hand, index finger,
middle finger, ring finger, little finger, back to the right wrist, to the right elbow, to the right shoulder, to the pit of your throat. Now the light moves to your left shoulder, to your left elbow, to your left wrist, left thumb of your left hand, index finger, middle finger, ring finger, little finger, left wrist, left elbow, left shoulder, back to the pit of your throat. The light travels down to your sternum, between your chest, where the V forms, goes to your right chest, back to the sternum, goes to the left chest, back to the sternum, travels down to just above your navel, just below your navel, to the top of your right hip in the front, to the right knee, right ankle, big toe of your right foot, number 2, number 3, number 4, number 5, back to your right ankle, your right knee, your right hip joint, just under your navel, travels to the left hip, left knee, left ankle, big toe on the left, number 2, number 3, number 4, number 5, up to your left ankle, left knee, left hip, just below your navel, above your navel, sternum, the pit of your throat, and in between your forehead. Just breathe normally. Check in with yourself. When you're ready, gently open your eyes. महाभारत के युद्ध में जब Arjun was very confused, then Sri Krishna, he recited verse 24.7, Karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana. And you have the right to action and action alone, and not to its fruit. तो वो अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा काम खाली तीर चलाना है, वो मृग हिलेगा या उसका क्या होगा, या वो मृग itself, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. तो अर्जुन बोलता है कि जो मेरा फल पे अधिकार ही नहीं है, तो मैं एक्शन क्यों लूं? Krishna being Krishna, he was ready for it. So he says, he adds the second line to verse 24.7. He says, Ma karma phal hetur mate sangostva karmani. What does that mean?
it means that not only should you not be motivated by the fruit or the result or the outcome, that also cannot be a reason for inaction, for the lack of action. So back to number one, the only right that you have is the right to action. You have no right to the fruit. And just because you have no right to the fruit doesn't mean you resort to inaction. And that to me is surrender. I think all that we can do is take the right action, karma, and whatever happens, happens, and that's the surrender to Guruji. If you look at some of the major personalities, so even in the Western world, Kobe Bryant, he said, "I never focus on the result. I only focus on the process." James Clear, has anybody read Atomic Habits? Yeah. He says, "Optimize for process, not outcome." Because if you optimize for outcome, you might win once, but if you optimize for process, you might win multiple times. Adam Grant, another renowned author, said the same thing. Simon Sinek, another renowned author, said the same thing. Billionaire Howard Marks, he said the quality of the decision is not by the outcome, but the quality of the decision is by the process it takes you to get to the decision itself. Pankaj Tripathi, actor, he said, "I don't serve the audience, I just serve the character." And of course, my personal favorite, MS Dhoni. Anytime somebody congratulated him, he said, "Don't congratulate me for the result. Congratulate me for the process that we followed." And that's why he promoted himself ahead of Yuvraj Singh in 2011, the player of the series that helped India win the World Cup in 2011. I'll close out with this one last story, which I think reinforces the right to action and the right to right action alone. So, एक आदमी होता है and he's just out with his friends in a bar and he's had one too many drinks. So he's pretty much losing all of his sense, but he still needs to get home, drunk driving. Well, I'm not judging him, I don't know him, and whatnot. Anyway, he comes out of the bar and he drops his key. Somewhere he drops his key. And he starts looking for the key. There's a bright spotlight and he starts looking for his key. वो ढूंढता है, नहीं मिलती. वो ढूंढता जा रहा, नहीं मिलती. एक passer by जा रहा होता है. वो उसको पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, मेरी चाबी नहीं मिल रही है. Of course, drunken, I can't do the drunken voice. So, वो बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. वो भी ढूंढने लग जाता है. नहीं मिलती. एक और जाता है. क्या कर रहे हो? चाबी ढूंढ रहे हैं. वो भी ढूंढने लग जाता है. 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं. तभी एक वाइज मैन जाता है और वो बोलता है कि क्या कर रहे हो? चाबी ढूंढ रहे हैं. कहाँ ढूंढ रहे हो? ये स्पॉटलाइट है, यहाँ ढूंढ रहे हैं. चाबी यहीं गिरी थी. कहते चाबी तो वहां गिरी थी, पर लाइट यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ. With that, I hope you can keep whatever you're feeling. Hopefully you were able to get something out of it. I hope you're able to keep this with you for the rest of the day, into tomorrow, into the week. Feel free to look up some of these, and I hope this was helpful in some way. And thank you again for giving me the opportunity to talk, and thank you, Guruji, for allowing me to be here in front of you. Jai Guruji. Well, thank you so much, Nitin Uncle. Honestly speaking, I am feeling energized as if I took an 8 hours of nap. So you rightly said you will feel energized and awakened. So thanks a lot for coming here and helping us with the process of meditations. Those who don't remember what were the different levels of back, I personally don't remember. It's absolutely fine. But as he rightly said, please keep focusing on the process. Thank you very much. Sangatji would request all of you to please be seated at your respective places, and Sevadas would request you to get up section wise, and Langar Prasad would be given at exit. Sangatji, आप सबसे निवेदन है कि अपनी जगह